Hello, 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 hello. Okay, testing the audio check. Okay, so we are live. Hi guys, welcome back. Okay, new day with new topic. So, hello and welcome to today's live session on this YouTube channel. I'm Akash Nigam and I'm thrilled to have you all here as we dive into this crucial topic in the world of networking. VLANs, right? Virtual local area network. Before we get started, let me give you a quick overview of what you can expect from today's session. We'll begin by understanding the basics of VLAN. Just a second, let me pen down the things out. So, what are VLANs? Why are they essential? And how they can significantly improve your network's efficiency and security. Then, we'll move on to more advanced configurations, including trunking and inter-VLAN routing. Right? So, finally, we'll have a live demonstration followed by a question and answer session where you can ask all your burning questions. But first, let's take a moment to see who's joining us today. Here, we will be working over with one of Cisco's simulation tool, which helps us to emulate the entire network, which is called as the Cisco's Packet Tracer. So with the help of Cisco's Packet Tracer, you can easily perform all the labs that you have been following so far. I'll quickly just take the screen down just so that I can just log in it. Just a second, guys. Okay. So the major things that we are going to cover up today are the basics of VLAN, what exactly is inter-VLAN routing, how do you perform this particular segregation and the isolation of your network's specific segment throughout the LAN environment. That too with the help of the switch. But before that, the question rises is what is a switch? So yeah, I have given you the final topic of the this particular series. But it will start from I used to will means I love to deliver like from basic and from scratch the things out, right. So I'll start from the very basic where we have seen about why the need of this particular device of layer 2 was needed. So layer 2 is also a term that means yeah, I'll start from OSI again, guys. Okay, so without much ado, I'll quickly start the topic. And now, if there is anything that you guys want to ask, right, feel not to comment or just ask it out. I will be constantly keep on checking the previous videos comments also, right? So it will be in a span of 2 weeks. I'll be checking every previous video. So if there is any question in the previous video, please expect a delay time of answer within 2 weeks. Okay, so let's start. So guys, today we are going to discuss about layer 2, right? If I talk about layer 2 सुनते से ही आपके मन में क्या आता है? Don't you go for OSI? Yes, the Open Systems Interconnection Model, OSI model. OSI model जो 7 लेयर्ड आर्किटेक्चर था, उसमें सेकेंड लेयर या लेयर 2 हम बिल्कुल बॉटम से काउंट करते हैं, जस्ट आफ्टर द फिजिकल, एंड दैट पर्टिकुलर लेयर is the data link layer.
डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट होने वाला डिवाइस है आपका स्विच, बट स्विच से भी पहले ब्रिज नाम के डिवाइसेस आया करते थे. You can say if bridges are on steroid, then a switch can be developed. That is how I understand that. Because switches do have all the advanced features in comparison to the bridges. Okay, guys. But why were these devices developed? That is my basic question. So let me tell you the entire story. Let's assume हम एक ऐसा समय इमेजिन करते हैं जहां पर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस मौजूद नहीं है मार्केट में. एंड उस वक्त जब मार्केट में कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस मौजूद नहीं था, सारे के सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, दैट वाज द कॉपर केबल. और कॉपर केबल का जिस वेरिएंट को यूज किया जाता था, दैट इज कॉल्ड एज द कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल को आप लोग डिस्क वाली तार के नाम से जानते होंगे, राइट? द ब्लैक कलर्ड केबल. उस केबल में दो अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं. वन इज अ थिन नेट केबल एंड द अदर वन दैट वी हैव इज द थिक नेट केबल. Just as the name specifies, thin net is the thinner gauge cable, whereas thick net is the thicker gauge cable. इन सभी केबल्स के अंदर प्लास्टिक क्लैडिंग के अंदर कॉपर की एक तार होती थी. Now guys, do remember, if I talk about copper, copper is a good conductor of heat and electricity, right? यहाँ पर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो हीट की बात तो हम नहीं करेंगे. यहाँ पर इट मस्ट हैव बीन यूटिलाइज्ड इफ इट वाज अ वायरलेस सिग्नल. तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की. अगर किसी भी कॉपर के केबल सेगमेंट में आप दोनों ही डायरेक्शन से करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट. बट यहां पर वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू द डेटा, एंड केबल्स में डेटा का फ्लो इतना हाई पावर के साथ नहीं किया जाता है. सो डेफिनेटली यहां शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, बट यस, सम सॉर्ट ऑफ डेटा लॉस विल डेफिनेटली हैपन. एंड ड्यू टू दिस लॉस ऑफ द डेटा रीजन, हम ये अज्यूम करके चलते थे कि कोएक्सियल केबल्स में जब भी कनेक्टिविटीज कराई जाएंगी कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, डेफिनेटली कोएक्सियल केबल सपोर्ट करेंगे ओनली अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज दिस हाफ डुप्लेक्स? दिस हाफ डुप्लेक्स, whenever we communicate, there are multiple ways to communicate. जब भी एक सेंडर रिसीवर को ट्रैफिक भेजता है, सो एक तरीका हो सकता है जहां पर एक मशीन सिर्फ सेंडर की तरह बिहेव करेगी एंड दूसरी मशीन को रिसीवर की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा. दे कैन नॉट स्विच पोजिशंस. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका टेलीविजन, राइट? यू कैन नॉट स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग टू योर टीवी. यू विल हैव टू सी व्हाटएवर इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन द स्क्रीन. So your TV is the sender and you are a receiver. This kind of a communication is called as a simplex communication. After simplex, there comes the scenario where both the devices can be sender or receiver. But if sender starts to send, then the receiver cannot change its role, and if a receiver starts to send, then the sender cannot change its role. So that the case is one at a time communication होता है यहाँ पर, and such one at a time communication is called as half duplex. जहाँ पर यदि एक डिवाइस सेंड कर रहा है तो दूसरा डिवाइस सिर्फ रिसीव कर सकता है, वो डेटा शेयर नहीं कर सकता. Okay. After this, the third mode of communication is where both devices can behave as sender and receiver, as well as दोनों simultaneously data transmit भी कर सकते हैं. And such a mode of communication is called as full duplex communication. तो guys, मैं आपको उस स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ जहां पर कोएक्सियल केबल्स के थ्रू डिवाइसेस की कनेक्टिविटी की जाती थी जब नेटवर्किंग डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं. ड्यू टू दैट रीजन, कोएक्सियल केबल्स आपको एक हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करवा पाती है. नाउ व्हाट वाज द चैलेंज ड्यू टू दिस? लेट्स सी. सो आई हैव दिस मिस्टर PC1, PC2, PC3 and PC4. Let's assume a condition, guys.
जहां पर PC1 को PC4 से कम्युनिकेट कर PC3 से कम्युनिकेट करना है, बट एट द सेम टाइम PC4 को भी PC2 से कम्युनिकेट करना है. बीइंग a coaxial cable, we all know इस सिनेरियो में क्या होगा. As these cables are coaxial, definitely half duplex mode of communication, two devices cannot transmit at the same time. This current से 110% data collision तो होना ही. Now, what will be the result of collision? If data collision has occurred, definitely data is getting lost. And in a smooth flow network or in a well settled network infrastructure, you cannot expect data loss, right? इसी रीजन से कई सारे रिसर्च के बाद एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इज CSMA CD. CSMA CD स्टैंड करता है एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस with collision detection. And guys, this is a protocol for wired network infrastructure. So what exactly does this protocol do? Let's see. Guys, ये protocol इस collision को mitigate करने के लिए develop किया गया था, and CSMA CD नाम का protocol सभी host devices पर install कर दिया गया. हम वापस से वही सिनेरियो देखेंगे जहां पर दोनों डिवाइसेस को एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करना है, बट दिस टाइम बीइंग CSMA CD इंस्टॉल्ड ऑनटू द होस्ट डिवाइसेस. PC1 को PC3 से कम्युनिकेट करना था, PC4 को PC2. जैसे ही कोलिजन हुआ, दिस टाइम बीइंग CSMA CD इंस्टॉल्ड ओवर टू द डिवाइसेस, जस्ट एज द मोमेंट व्हेन द कोलिजन विल अकर, एंटायर नेटवर्क विल बी फ्लडेड विद सम जैमिंग सिग्नल्स. इसके नाम में ही सारी डिटेल. Carrier is this cable, right? So this particular carrier can easily sense whenever multiple devices are accessing the domain for data transmission, as well as this protocol provides with the collision detection. If there is a collision, the advertisement of jamming signals proves its detecting capability. Okay, so CSMA CD ने जैमिंग सिग्नल एडवर्टाइज किया. जैमिंग सिग्नल रिलीज होते ही आपके दोनों ही सेंडर डिवाइसेस जो डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे थे, नाउ दे विल हैव टू वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम व्हिच विल बी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड फॉर बोथ द डिवाइसेस. तो लेट्स अज्यूम PC1 ने वेट किया फॉर 3 सेकंड्स, हालांकि ये मिली सेकंड्स में होती हैं वैल्यूज, एंड PC4 ने वेट किया फॉर 8 सेकंड्स. So once 3 seconds are completed, 3, 2, 1, 0, PC1 will transmit the traffic to PC3 and its communication is done, although with a delay, but yes, it's done. Meanwhile, PC4 is waiting here, right? So PC4 is waiting for 8 seconds. That means 7, 6, 5. Now it will also start deducing its timer. 4, 3, 2, 1, 0 and PC4 भी data transmit कर देगा PC2 को. बट गाइस, ठीक है, सॉर्टेड था कम्युनिकेशन, बट व्हाट इफ जब PC4 PC2 को डेटा ट्रांसमिट कर रहा था, ठीक उसी वक्त PC2 को भी PC3 को डेटा ट्रांसमिट करना. इट्स अगेन अ सिनेरियो ऑफ कोलिजन. So what do we understand here? The scenario is, although CSMA CD नाम का प्रोटोकॉल डेवलप तो किया गया था टू मिटिगेट द कोलिजन, as the working I have explained, rather than mitigating the collision, it has already increased the wait time of the sender. And in a communication, और आज के डोमेन के such
फास्ट पेस्ड कम्युनिकेशंस के बीच में none of our devices or any individual human would love to wait. Other than waiting time, you are not even aware that when can you transmit your data. That means a never hold strategy. So, although this particular protocol has handled the collisions, but it didn't work that well. जिस एक्सपेक्टेशन से इसे डिलीवर करने के लिए बनाया गया था. तो अगर कोलिजन डिटेक्ट हुए तो डिवाइस ट्रांसमिट करना रुक जाएगा, सेंड करेगा जैमिंग सिग्नल और वेट करेगा रैंडम बैक ऑफ टाइम का. इसके बाद वो वापस से रीट्रांसमिट करना चाहेगा डेटा. हाँ, CCNA ने नेटवर्क के मीडियम को एफिशिएंटली यूज करने के लिए तो हेल्पफुल बना दिया, मगर हमारे डेटा के ट्रांसमिशन में किसी भी हालत में कोलिजन्स में कोई भी चेंजेस नहीं ला पाया. And guys, this was the reason, although CCNA being the foundational network protocol has enabled effective communication in early Ethernet networks. But किस तरीके से हम मैनेज करेंगे डिवाइसेस को शेयर्ड मीडियम में और हैंडल करेंगे डेटा कोलिजन, इस चीज ने बस हेल्प किया था. बट हमारी जरूरत थी कोलिजन्स को मिटिगेट करना, जो CCNA किसी भी हालत में फुलफिल नहीं कर पाया. Due to that reason, later on, the first networking device of layer 1 hub was developed. I'll go down from layer 1 only, okay? So hub को develop किया गया, physical layer of OSI model, or you can say layer 1. अच्छा guys, एक और चीज नोटिस करेंगे. The diagram which I just made, where 4 computers were connected all together with a coaxial cable. So here in this particular diagram, what I can see is all these 4 devices. If any of the two devices of these particular group tries to transmit at the same time, 110% collision will occur. So such a connected domain for me is considered as a collision domain, guys. Any particular domain where the collision is a possibility, that I'll consider as a collision domain. Okay, I hope what does collision means, that is clear for everyone. Let's move ahead. So now it comes for the hub. सबसे पहले लेयर 1 हब डिवाइसेस को डेवलप किया गया. वैसे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में हब को डम डिवाइस भी कहा जाता है. डम डिवाइस व्हाई? बिकॉज इट नेवर वर्क्स as the sender intends to. Yes, you heard me right. आइए देखते हैं. हब को कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया था कि लेट्स सपोज इफ यू हैव अ 10 पोर्ट हब, तो कहा यह जाता है कि आपके 10 पोर्ट वाले हब में ऑल द 10 पोर्ट्स will be part of single collision domain. क्योंकि किसी भी नए अपग्रेड को अगर फॉलो किया जाता है तो उसको उसके प्रीवियस रिफ्लेक्शन के रेलेवेंस में ही अपग्रेड किया जाता है. ड्यू टू दैट रीजन जब हब डेवलप किया गया था तो उसमें भी कोलिजन डोमेन सिंगल होने की समस्या थी, जिस कारण से आपका कोलिजन उस वक्त भी कम नहीं हो पाया था. And along with collision, इसकी broadcast domain भी single for all the devices. So what exactly this device hub is? Let's look on to that also. Guys, hub एक layer 1 डिवाइस है. लेयर 1 डिवाइस होने के कारण हब फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है आपकी OSI मॉड्यूल, और ये सिंपली डेटा को रिसीव करेगा एक डिवाइस से और उसको ब्रॉडकास्ट करेगा बाकी सभी डिवाइसेस में जो भी हब से कनेक्टेड हो. सेकंड सिनेरियो,
ये हमेशा सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है. इट ऑलवेज डज द सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट. जब भी किसी हब के पर्टिकुलर पोर्ट पर कोई डेटा रिसीव होता है किसी एक डिवाइस से, हब उसको जिम्मेदारी से फॉरवर्ड करेगा उन सभी पर्टिकुलर डिवाइसेस पे जो उससे कनेक्टेड हैं. फर्क नहीं पड़ता अगर आपका डेटा उस पर्टिकुलर रिसीवर के लिए बनाया गया था, राइट. दैट मीन्स अगर एक पीसी ए है जो मेरे हब से कनेक्टेड है, अब पीसी ए को हब 1 से कनेक्टिविटी मेंटेन करते हुए पीसी बी से कम्युनिकेट करना था, बट यूनिकास्ट मोड में. यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन. ओके, जब मैंने क्लासेस ऑफ आईपी एक्सप्लेन किया था, दैट टाइम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन what unicast, multicast and broadcast is. So PCA wants that a secret communication should be silently delivered to PCB. But being hub here available to save this entire communication, as soon as this particular traffic will reach on to hub being a dumb device, because they don't have any particular intelligence available to identify the data they are transmitting, right? Due to that reason, it will send a copy of this particular data to all the devices which are connected to all other ports. Other than this, another key highlight that you should remember about hub: all devices connected to the hub, they share the same collision domain. That means if two devices connected to the hub, they try to transmit data at the same time, again collision will occur. So the data has to be retransmitted. If I talk about the present day scenarios, guys, तो आज के डेट में आपके हब को रेयरली यूज किया जाता है. इसका एक प्लस पॉइंट कहा जाए या अच्छी चीज मानी जाए तो इट इज वेरी सिंपल इन इनएक्सपेंसिव. ये स्विचेस के मुकाबले तो बहुत कम एफिशिएंट है, मगर हब सबसे सस्ते नेटवर्किंग डिवाइसेस कहला सकते हैं. ये सूटेबल होते हैं एक छोटे सिंपल नेटवर्क के लिए, या आप कह सकते हो ट्रबल शूटिंग पर्पजेस के लिए. इनको आप यूज कर सकते हो. ओके, आफ्टर हब सीएसएमए सीडी को ने जब हमें इतना निराश कर दिया, इसके बाद हब बनाया गया. while the manufacturing of the hub, entire network community was excited to forget that collision. But hub also didn't help us. Later on, when we were already saddened of the CSMA CD protocol and the hub, a device called as bridge was developed. अगर ब्रिज की बात करूं, ब्रिज एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो कि डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है. ओएसएम मॉडल में इसको डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करने वाला डिवाइस कह सकते हैं आप. और इसका एक ही पर्पस है. आमतौर पर अगर आपको दो होस्ट डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना है तो यू कुड हैव यूज्ड एन ईथरनेट केबल, राइट. इसी तरीके से हम कॉलेजेस में भी डेटा ट्रांसफर किया करते थे लैपटॉप्स और सिस्टम्स के बीच. बट व्हाट इफ आई हैव टू कनेक्ट 100 such devices, let's say 3 such devices or 4 such devices. I definitely need an add-on connector or something additional rather than the cable. तो ब्रिजेस को इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि हम दो या दो से ज्यादा नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकें. ब्रिज के कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए. ये आपके नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है. इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी. ब्रिजेस में डिवाइसेस के थ्रू डेटा एक पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट से रिसीव किया जाता है और उसे अप्रोप्रिएटली उसी सेगमेंट तक पहुंचाया जाएगा जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपके ट्रैफिक के अंदर मेंशन किया गया. यहां पर सारे के सारे ऑपरेशंस ट्रांसपेरेंट होते हैं.
What do I mean by transparent operations? Guys, bridges को आदत होता है ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करने का। मतलब ये डिवाइसेस के लिए कंप्लीटली इनविजिबल होते हैं पूरे नेटवर्क में। अगर पीसी ए को डेटा ट्रांसमिट करना है पीसी बी को, हालांकि इनके बीच में एक ब्रिज नाम का डिवाइस कनेक्टेड होगा, बट फॉर पीसी ए एंड पीसी बी it will be completely invisible. The reason is the traffic which is being executable at a very different layer, उसको lower level या upper layer devices identify नहीं कर पाते. Okay? Now, यहाँ पर जितना भी डेटा फ्रेम ये फॉरवर्ड करते हैं ब्रिजेस, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें डेस्टिनेशन या सोर्स मैक एड्रेसेस को देख करके फ्रेम के फिर डिटरमाइन करके उसको फॉरवर्ड करते हैं, दैट्स इट. इसके अलावा डेटा फ्रेम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाती. नेक्स्ट थिंग विच इज समथिंग टू रिमेंबर बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग more about this particular thing in the coming batches. MAC address learning. Yes, that's the interesting thing. Bridges MAC address table बनाते हैं and in MAC address tables के अंदर वो associate करके रखते हैं कि किस पोर्ट पर MAC address आखिरी बार दिखाई दिया था. Port is mapped with the last seen MAC address. Why is it done? Guys, इसके मदद से ब्रिजेस को आपके ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने में एफिशिएंटली मदद मिलती है टू दी डेस्टिनेशंस एंड बिना नेटवर्क में कंजेशंस को बढ़ावा दिए. ओके, some limitations. It has some limited functionality. ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस ना टिपिकली सिर्फ एक सिंपल नेटवर्क एनवायरनमेंट में आप यूज कर पाओगे. ओनली एप्लीकेबल इन अ सिंपल नेटवर्क एनवायरनमेंट बिकॉज इसमें कुछ एडवांस फीचर्स लाइक वर्चुअल लैंस, ओके, एंड क्वालिटी ऑफ सर्वर्स, पोर्ट मिररिंग, ऐसे खास फीचर्स आपको ब्रिजेस में कभी भी नहीं मिलेंगे एंड दैट इज द रीजन व्हाई इनको छोटे नेटवर्क्स में ही इंप्लीमेंट किया जाता है. Yes, we should not forget if we are talking about bridges. So हालांकि ये हमारे फ्लो से थोड़ा अलग है, but yes, let me just mention it for a second. The wireless bridges. वायर्ड ब्रिजेस के एडिशन में वायरलेस ब्रिजेस भी आते हैं जो दो सेपरेट वायरलेस लैंस को आपस में कनेक्ट करने या एक्सटेंड करने के लिए काम करते हैं. वायरलेस ब्रिजेस की बात करें तो ये रेडियो सिग्नल्स पे काम करते हैं रादर दैन द फिजिकल केबल्स, और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ये नेटवर्क सेगमेंट्स के बीच में इजीली ऑपरेट कर जाएंगे. नाउ गाइस रिमेंबर, ब्रिजेस वो सिंपल नेटवर्क डिवाइस हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो एंड कम्युनिकेशन करवा सकते हैं बिटवीन द डिवाइसेस. हालांकि इनको बहुत ही तेजी से रिप्लेस किया गया विद द स्विचेस which is easily visible in the modern network infrastructure. But yes, they might have some use case, especially छोटे और legacy networks में. So talking about giving steroids to the bridges and creating the switches, we are here with the manufacturer of the switches. Switch is an advanced featured version of bridge. This also operates at layer 2. Layer 2 means data link layer. स्विचेस को कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया था. ये स्विचेस के सारे पोर्ट, let me just mention this particular thing in form of a definition and I'll request anyone who is pen downing the notes out of my lectures, please इसको highlight करके लिखिएगा because this is the very important definition of this lecture.
Just a second, guys. All switch ports are part of separate collision domain. Yes, you heard it right. That means अगर मेरे पास कोई ऐसा switch है which has 24 ports, so yes, you can easily, without any doubt, you can proudly say that yes, my switch has 24 separate collision domains. That means your traffic has individual ways of exiting of your network from your network segments. But guys, remember, all these switch ports which are part of separate collision domain, all these switch ports still have single broadcast domain. I know broadcast domain and collision domain might be sounding confusing to you all. So let me just explain it in the most easiest way. Guys, देखो, नेटवर्क्स की भाषा में या नेटवर्किंग की पढ़ाई आप जब भी करोगे, ऑलवेज एक चीज का ध्यान रखना, the experts call the word domain as a replacement of network only. तो डोमेन और नेटवर्क दोनों का मतलब सेम ही होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, कोलिजन डोमेन. कोलिजन डोमेन मतलब ऐसा नेटवर्क का सेगमेंट, नेटवर्क का ऐसा हिस्सा जहां पर डेटा का कोलिजन होना पॉसिबिलिटी है ड्यू टू एनी एक्स वाई सी रीजन. ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब एक ऐसा नेटवर्क का सेगमेंट या ऐसा नेटवर्क का हिस्सा जहां पर यदि एक बार ट्रैफिक भेजा जाए, एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजा जाता है, तो जिस पर्टिकुलर नोड पर या जिस पर्टिकुलर पोर्ट पर वो भेजा गया है, उसके अलावा बाकी सभी ब्रॉडकास्ट डोमेन के पार्टिसिपेंट्स के पास उसकी एक एक कॉपी चली जाएगी. I'll tell you how it works. So let's assume this 24 port switch of ours. इसके लिए हम कह सकते हैं कि 24 के 24 पोर्ट्स सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आते हैं. With respect to this definition, right? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन 24 में से पोर्ट नंबर 1 पर एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजता हूं, तो सिवाय पोर्ट 1 के बाकी सारे फ्रॉम पोर्ट नंबर 2 टू पोर्ट नंबर 24 सभी पोर्ट्स पर इस पर्टिकुलर फ्रेम की एक एक कॉपी फ्लड कर दी जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन फीचर. ये होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल होने का इफेक्ट. तो क्या स्विचेस में कहीं ना कहीं जाकर के कोलिजन कम हुआ. How it was manufactured, that we don't know, but yes, now we know that collision has been mitigated, and that has been done with the help of switches. So I hope this entire journey of the manufacturing of switches is clear for everyone. Let me just check the comments once. Although I know no one would have asked anything, but still let's just check. Okay. Let's see what else do we have. Okay, it's directly from the VLANs. No worries. Now, so being disappointed of the half duplex communication, CSMA CD protocol, hubs, bridges, finally the switches were manufactured. And switches somehow definitely mitigated the collisions by generating separate collision domains, but still keeping the broadcast domain single. Now guys, these switches, अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच आपको मार्केट में दो अलग अलग वेरिएशंस में मिलते हैं. पहले जिन्हें कहा जाता है मैनेज्ड स्विचेस, एंड उससे भी पहले आते हैं आपके अनमैनेज्ड स्विचेस. Don't worry, we will be studying about managed switches only. Unmanaged is just an introduction of a previous variation.
अनमैनेज स्विचेस की बात करें सो गाइस अनमैनेज्ड मींस व्हिच कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड. क्यों कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है? इसके लिए रिमेंबर द गोल्डन रूल. Networking devices like switches, routers, every particular device, they have a console port. By using a rollover cable, or you can say the console cable in the industrial standards, console cable की हेल्प से अगर आप console port से कनेक्टिविटी लेते हैं, then only you can physically access the device for configuration. एंड हम सबको पता है कि अगर रिमोटली हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हमारे पास टेलनेट या एसएसएच जैसे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आउट ऑफ विच एसएसएच इज द रिकमेंडेड मेथड टू ऑपरेट एट, बिकॉज वहां पर आपका ट्रैफिक प्लेन टेक्स्ट में नहीं कम्युनिकेट करता है. ओके, सो यस, दैट इज द कंसोल पोर्ट. नाउ गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अनमैनेज्ड एंड द मैनेज्ड डिवाइसेस वाज, आपके मैनेज्ड स्विचेस में कंसोल पोर्ट आपको मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. But in the unmanaged switches, there was no console port. So these devices can only be used as plug and play, nothing else. There were features, but they were not given name. That means they were all localized. When managed devices came into the market, they were launched with every sort of features available. Due to this reason, unmanaged switches आपको बहुत ही cheaper rate पे available हो जाएंगे, but managed devices, yes, they are pricey as hell. एक नाइस ग्रेड स्विच अगर आप खरीदने जाते हो ऑन एन एवरेज फॉर अ वेरी स्मॉल स्केल इंफ्रा, it would easily cost you 80 to 90,000 for a proper upgraded variation of the network support. Now, मैनेज स्विचेस में भी आपको स्विचेस दो अलग अलग लेयर पर ऑपरेबल मिल सकते हैं. हम स्टडी करेंगे सीसीएनए के अंदर कोरली अबाउट द लेयर 2 स्विचेस. बट कुछ ऐसे भी स्विचेस आते हैं जो मल्टी लेयर्ड होते हैं. दैट मीन्स दे कैन ऑपरेट एट मल्टीपल लेयर्स. सो आपको यहां पर एक लेयर 3 स्विच भी दिखाई देगा. तो यहां पर सीसीएनए के अंदर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट 2 such switches which operate at layer 2 and another one which operate at layer 3. So let's put layer 3 on hold for some time until Inter-VLAN starts. We will be corely focusing over layer 2 now. Guys, मैं layer 2 की बात कर रहा हूं. If any of you have forgotten, so let me just give you a quick reminder. Layer 2, that means OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर में व्हाट इज द पीडीयू फॉर लेयर 2? लेयर 2 का पीडीयू क्या होता है? गाइस, द पीडीयू फॉर लेयर 2 इज फ्रेम. जैसे लेयर 3 में इंटरनेट प्रोटोकॉल मिलता है आपको, तो वहां पर आपका पीडीयू होता है पैकेट, जिसको आप IPv4 पैकेट या IPv6 पैकेट कहते हैं. सिमिलरली फॉर लेयर 2, फ्रेम आपके हर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं. ATM फ्रेम, BPDU फ्रेम्स, राइट, स्नैप फ्रेम्स. Similarly, the predominant technology we are operating at is Ethernet. तो आप यहां पर देखोगे एक Ethernet फ्रेम जिस पर स्विचेस ऑपरेट करते हैं मोस्टली. गाइस, आगे पढ़ने से पहले हमें एक Ethernet फ्रेम का प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. So I think I have already briefed this particular Ethernet frame header previously. So I'll quickly just take out an image और उस पर जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको.
Let's go for any random image. Yeah, that looks good. It works for me. Okay, let's go. So guys, as you can see, this is your entire Ethernet frame header, which basically follows the 802.3 standard of IEEE. If you look closely, your Ethernet header starts with the preamble field. Talking about the preamble field is of 7 byte in length. Guys, this preamble field is here not only for show off, it works exactly. And the work it does is it will show you the alternate sequence of 101010 till the end. And with this alternate clocking sequence, it helps the two receivers to synchronize their receiver clocks. After this comes the next field, which is the start frame delimiter, which I coolly call as SFD. The SFD field is of 1 byte in length, as you can see. This field helps the switches to identify that after what 8 binary bits the real frame's destination MAC address or the real frame will start, because the frame is assumed to start from destination MAC address itself. So yes, here comes the destination MAC address after the 8-bit of garbage values of SFD. Sorry, not the garbage value, it is a specific value. But yeah, as I have not seen it, that's why I've used this word. Okay, so destination MAC address, it is of 6 byte in length, 48-bit 6 bytes. It tells you about the target device where your frame needs to be forwarded for. Then comes the source MAC address. It is the MAC address of the initiator of your particular frame who has generated the frame. Then comes the length field. Okay, I prefer to call this length field as the type field or the ether type. Guys, in many references, you might find all these three words used at different places. Like the image which I used here, this particular field is called as the length field, okay? In some references, you might find this particular field to be identified as the type field. So do remember, whether it is length or it is type or it is ether type, all these words simply signify to that unidentifiable amount of payload that needs to be transmitted to some other protocol at the upper layer or at the same layer. So this particular field only contains some type codes, okay, and this field is of 2 bytes in length. If the code mentioned in this particular field is 0x0800, that means at the upper layer you will hand over this entire traffic or this entire data payload to IP version 4 header. Let's say if it is not an integer but it is in hexadecimals, that means 0x08DD. It clearly signifies that the forwarding has to be done towards IP version 6. But what if none of these two are there? There is a possibility you might also see the type code to be 0x0806. Then in such case, you won't be forwarding your traffic to the upper layer, but you'll be forwarding your traffic to the similar layer protocol, which is called as ARP, the Address Resolution Protocol, the one that helps you to find out the MAC with the help of IPs. So yes, these are mentioned within this particular length field of 2 bytes that helps you to identify that this 46 to 1500 bytes variable data size has to be transmitted or forwarded to what particular protocol.
So yes, here we are with 46 to 1500 bytes data field, which is of variable in size, because your data has smaller chunks which are created, and they can be of different sizes, right? So yes, your data size would be varied. But do remember, the maximum transmission unit of your switches, आपके switches का MTU, maximum transmission unit, दैट मीन्स एक बार में आपके स्विच के पोर्ट से कितना ट्रैफिक निकल सकता है, ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है 1500 बाइट्स पर 1500 बाइट्स। इसी के हिसाब से आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगा नेटवर्क में। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपको MTU बदलना है तो आप किसी भी इंटरफेस पर CLI के थ्रू जाएं एंड वहां पर MTU कमांड चला करके आप उसका MTU बदल भी सकते हैं। yes, it is changeable, you can change it if you want to, depending upon the requirements in the network. So let's assume one scenario here, guys. यहाँ पे तो डेटा फील्ड कहा गया है इसको, बट जब मैं पढ़ाता हूँ, so I used to educate people about this field with two terms. Ethernet फ्रेम हेडर की इस फील्ड को कई लोग डेटा एंड पैडिंग फील्ड के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे पेलोड के नाम से भी जानते हैं. So guys, I prefer to use the data and padding word. The reason is, let's assume a PC X is trying to transmit the traffic to PC Y. But being the MTU limit of 1500, मैं एक बार में 1500 बाइट से ज्यादा ट्रैफिक तो भी निकाल ही नहीं सकता in a single transmission. Let's assume the data size of my entire traffic was 4543 bytes. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, स्विचेस की एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी के कारण स्विचेस कोई सा भी फ्रेम जिसका साइज फोर्टी 46 बाइट से यदि कम है तो स्विचेस ऐसे फ्रेम्स को रंट फ्रेम या एरर फ्रेम मानते हैं. And guys, always remember, such frames are never entered into the layer 2 domain of your switches. They never get to see the switch ports entrance. Okay, so ऐसे frames को avoid करने के लिए ही यहाँ पर padding field होती है. How it works? Let's see. So PC X will transmit the initial 1500 bytes of traffic at the first hand, and then it will be left with the 3043 bytes of traffic. Again, I can transmit 1500 bytes. I'll be left with 1543 bytes of traffic. Once again, the 1500 bytes of the traffic can be transmitted. But now the question lies that, Akash, we have the 43 bytes of traffic left, and it is an error frame with respect to the switches understanding, right? Switches के हिसाब से ये 43 bytes का traffic तो error है, और ये इसको translate या forward नहीं करेंगे. But that is why this padding field is there. पैडिंग फील्ड क्या करेगी, इस पर्टिकुलर 43 बाइट्स ऑफ डेटा के साथ 3 बाइट की पैडिंग ऐड कर देगी. पैडिंग इज जस्ट एन additional value which is of no means, but yes, devices know that is an additional value over to the data, but somehow it is comprising the frame, so switches will not neglect it. So by adding this 3 byte of padding, your data frame has became at least of 46 bytes. That means now your switch cannot neglect this particular frame, it will accept it, and that is how you will be able to comprise your entire understandable format of your traffic. So all those extra bits added to the data packet or frame in order to ensure that it will meet the certain size or the alignment requirements. Guys, ध्यान रखिएगा, पैडिंग को ना नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में सिर्फ इंश्योर किया इसलिए यूज किया जाता ताकि डेटा पैकेट्स ना हमारे किस स्पेसिफिक साइज के बन सके, इसके अलावा इनका कुछ भी काम नहीं.
टिपिकली आप समझ सकते हो कि पैडिंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक आर्बिट्ररी डेटा है। और इसको हमेशा रिसीविंग डिवाइस रिमूव कर देता है रिसीव करते। ओके, डेटा इन पैडिंग फील्ड की बात हो गई। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। So guys, this entire field structure right before data field, that means from preamble till the length field, this is called as your Ethernet frame header. And this entire specific field, FCS field, which performs the cyclic redundancy check, the CRC check of 4 bytes, जिसके थ्रू आपके फ्रेम्स के एरर चेकिंग कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये क्रिएट करती है आपका इथरनेट फ्रेम ट्रेलर। और स्विचेस इसी इथरनेट फ्रेम के बेसिस पर ही अपना सारा का सारा फीचर्स एग्जिबिट करते हैं। I'm showing you some definitions to pen down. Please note it down. One key definition of the tendency of a switch is a switch will always learn the source MAC address from inbound frames with which they create their MAC address table. मैंने शुरुआत में बताया था कि ब्रिजेस भी MAC address table बनाते हैं। Just like the bridges, switches also serve the same features and the same issues. So switches also create the MAC address table. How is that table created, and where are the pointers from which the MAC address table takes the entries? So जब भी आपके switch के पास कोई भी frame आता है, like the Ethernet frame header that we have just seen, right? जैसे ही आपके स्विच के पास वो पर्टिकुलर इथरनेट फ्रेम हेडर आएगा, स्विच का काम होता है सबसे पहले इसका सोर्स मैक एड्रेस रीड करना। दैट्स व्हाई स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर उसको आइडेंटिफाई करवाता है कि ओके फाइन, नेक्स्ट 6 बाइट्स हमारे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, मतलब आपको जहां ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, लेकिन ट्रैफिक भेजा किसने है वो इसके 6 बाइट्स के बाद मिलेगा आपको। तो स्विच फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्स द सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस को अपने जिस रिसीविंग पोर्ट पर ये फ्रेम मिला है उसके साथ मैप करके वो मैक एड्रेस टेबल जनरेट करता है। Guys, do you remember one key point of the aging of these particular entries that the switch creates? एक MAC address table में within a switch's MAC address table, आपकी जितनी भी एंट्रीज डायनेमिकली लर्न की जाती है, दैट मीन्स आपने मैनुअली नहीं सिखाया है आपके स्विच पोर्ट्स को, या आपने मैक एड्रेस बोर्ड नहीं किए हैं पोर्ट्स पर, तो उन्हें हम कहेंगे डायनेमिकली, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली लर्न। Within a switch's MAC address table, the dynamically learned entries are flushed after an aging timer. Guys, do remember the keyword aging timer.
and the aging timer for these particular entries is of 5 minutes. That means 300 seconds. सवाल उठता है कि मैक एड्रेस टेबल में से एंट्रीज को 5 मिनट बाद हटाने की जरूरत क्या है? So guys, the reason of removing or flushing out these MAC address table entries after 5 minutes is to vacate the space for the rest of the upcoming communication. हम कभी भी अपनी communication line को busy नहीं रखते, and that is the reason why we keep on flushing out the entries randomly every time. Okay. Now, so this was the explanation of switches. अब इन्हीं switches की अगर हम बात करें, so स्विचेस का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एनवायरनमेंट, नेटवर्क एनवायरनमेंट में मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए. दैट मींस टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स, राइट? सो लेट्स अज्यूम आई हैव अ स्विच हियर व्हिच हैज हेल्प्ड मी टू कनेक्ट टू डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ माय ऑफिस. मैं बहुत ही सिली से एग्जांपल देने वाला हूं, बट जस्ट फॉर द केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो यहां पर मेरे एम्प्लॉयज बैठते हैं एंड नीचे मैनेजमेंट फ्लोर है जहां पर मेरा पेरोल डिपार्टमेंट वाले लोग भी बैठते हैं. So I have connected the payroll department and the employees all together with the help of a switch in the same building, ताकि वो मेरे ही कंपनी के नेटवर्क में काम कर सके. Now the problem is, अगर कोई एम्प्लॉय शाना निकला तो can't he get into its own payroll department's account information, just उनको वल्नरेट करके उसमें एक्सेस ले करके can't he हो सकता है उसकी सैलरी जल्दी आ जाए या ज्यादा आ जाए. That means if you are connecting multiple communicative entities all together in a network, there is a possibility of security risks. So layer 2, देखो layer 1 होता, layer 3 होता तो मेरे पास VPN जैसे फैसिलिटीज थी, ठीक है. मेरे पास सबनेटिंग तो अभी भी है, बट स्टिल सबनेट इज एन इंडिविजुअल लैन नेटवर्क, राइट? एक सबनेट अगर आप बनाते हो दैट इज बेसिकली योर इंडिविजुअल लैन. अब लैन के अंदर भी सेग्रीगेशन कैसे लाऊंगा? तो गाइस, लेयर 3 की सुविधाएं तो हम नहीं यूज कर सकते यहां पर, बट यस वी डू हैव लेयर 2, एंड दैट इज व्हाई दिस नेक्स्ट कंसेप्ट हैज टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली. एक लैन नेटवर्क के अंदर वर्चुअली कई सारे छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स बनाने के लिए आप VLAN जैसे कंसेप्ट का यूज करते हैं. VLAN का फुल फॉर्म है वर्चुअल लैन. VLAN के लिए अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन देना चाहूं, सो वर्चुअल लैन बेसिकली इज अ फीचर ऑफ अ स्विच दैट हेल्प्स in the separation of larger broadcast domains. Into multiple smaller ones. तो यस, ये भी आपके लेयर 2 का एक खास फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिस्को स्विचेस. VLANs की मदद से आपके डिवाइसेस एक लैन नेटवर्क में होकर के भी सेपरेट किए जा सकते हैं. गाइस, VLAN की अगर बात की जाए तो अब क्या होगा, वही सेम सिनेरियो ऑफ द बिल्डिंग हैविंग 2 डिफरेंट फ्लोर्स वर्किंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द पेरोल डिपार्टमेंट. इवन दो मैं इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ स्विच, बट व्हाट आई कैन डू इज, जिन पोर्ट्स से ये स्विच से कनेक्टिविटी ले रहे हैं, इन पोर्ट्स को मैं 2 अलग अलग VLANs में डाल सकता हूं, लेट्स से VLAN 2 और 3. ड्यू टू दिस रीजन आपको लेयर 2 पर भी सेपरेशन मिल चुका है. So how is this done? That is what we are going to study.
in the next half an hour. So let's start the topic VLAN. जैसा कि मैंने कहा था, अ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी मदद से आप कई सारे अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना सकते हो एक सिंगल फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर आपके पूरे लैन को ही कहा जाता है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि स्विचेस की मदद से, एक स्विच की मदद से आप एक लैन नेटवर्क इजिली इंटरकनेक्ट करके बना सकते हो। बट वही स्विचेस पर अगर आप वर्चुअल लेवल पर जाकर के VLANs क्रिएट करते हो, दैट इज दिस क्रिएशन ऑफ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो VLANs असल में क्या करते हैं, आपके नेटवर्क में उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ाते ही, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी बढ़ा देते हैं। कैसे? आपके नेटवर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल सेक्शंस में तोड़ करके। आई हैव सीन एन एक्सपर्ट and she is such a smart person. He tends to connect with every individual member of the organization he owns, right? And that is the reason why he has broken down them into smaller manageable sections. अगर आप एक बड़ी टीम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देते तो आपको उस पर्टिकुलर छोटे छोटे एलिमेंट्स पर या छोटे छोटे ग्रुप्स पर ऑफ दैट टीम ऑब्जर्व करना, इम्प्लीमेंटेशन करना आइडियाज की और इनको मैनेज करना, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी. दैट इज व्हाट द फीचर VLAN गिव्स यू द कैपेबिलिटी ऑफ. मूविंग अहेड विद द कांसेप्ट ऑफ VLAN, अगर हम VLAN के बेसिक्स की बात करें, ओके, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन बेसिक दैट आई विल कम लेटर ऑन टू. बिफोर दैट आई हैव टू एक्सप्लेन सम कूल थिंग्स अबाउट VLANs. गाइस, अगर VLAN की टेक्निकली बात की जाए तो VLAN एक कंप्यूटिंग एंटिटी है जिसका साइज लेंथ 12 बिट का होता है, 12 बिट्स. ध्यान से इसको देखिएगा. 12 बिट्स मतलब, ओके, व्हाट इज बिट? बिट मतलब बाइनरी बिट्स की बात कर रहे हैं हम. बाइनरी बिट्स में क्या क्या आता है? 0 एंड 1. दैट मीन्स दो पॉसिबल नंबर्स. 12 बिट्स का मतलब हुआ इन दो पॉसिबल नंबर्स के 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स 2 raised to the power 12. And 2 raised to the power 12 will definitely give you a value of 4096, which is the total number of VLANs available in the world. 4096 VLANs starts from 0 and they end up at 4095. If I talk about 0 and 4095 number of the VLAN, they are reserved for 802.1p ट्रैफिक. तो हम ह्यूमंस के पास यूटिलाइज करने के लिए जो VLANs हैं वो हैं फ्रॉम VLAN नंबर 1 to 4094. Okay. Cisco being the leader of this particular manufacturing industry, Cisco proprietary elements आपको पूरे के पूरे कोर्स में हाईलाइट करके दिखाए जाएंगे. This entire range of VLAN from 1 to 4094 has been broken down into two parts. One, which is an open standard part of normal VLANs, and the other part or the other section, which is the Cisco's proprietary section, the extended VLANs. Yes, the normal VLAN range starts from 1 and it ends up at 1005. Extended VLANs, हालांकि extended VLANs Cisco की proprietary VLANs हैं. That means आप ये सिर्फ और सिर्फ Cisco machines पर ही बना पाओगे. But that too, over to the Cisco devices, these particular VLANs can only be created over to the Cisco switches VTP's transparent mode. हम कुछ दिनों में VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. स्विचिंग के अंदर ही ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आता है, बट इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ CCNA, बट आई लव टू डिस्कस इट. So
बीटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर 3 मोड्स आते हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। तो उसके ट्रांसपेरेंट मोड पर जब आप सिस्को डिवाइसेस को डालते हो ना, तब जाकर के आपकी एक्सटेंडेड वीलैन्स क्रिएट हो पाएंगे। दैट मीन्स नॉर्मली तो कोई भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो हम बात करते हैं नॉर्मली द नॉर्मल वीलैन्स। तो गाइस हम ह्यूमंस के पास नॉर्मल तरीके से सिर्फ 1 से लेकर के 1005 तक की वीलैन्स ही बची। इसको और इन डेप्थ अगर आप देखते हो तो यहां पर भी कुछ रिजर्वेशंस लगाए गए हैं। बाय लेट्स सी टू इट। नॉर्मल VLANs, that is from VLAN 1 to VLAN 1005। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए VLAN 1002, 1003, 1004 एंड 1005 इन चारों ही VLANs को भी रिजर्व करके एक्टिवली अवेलेबल किया गया है आपके स्विचेस में, बट यू कैन नॉट एसोसिएट द पोर्ट असाइनमेंट सिनेरियोस टू देम। ये अवेलेबल है फॉर द रिजर्व्ड एक्सेस ऑफ द टोकन रिंग concepts as well as any connectivity that comes from the fiber defined data interface, the FDDI। तो FDDI और टोकन रिंग जैसे concepts के लिए इन चारों VLANs को भी रिजर्व कर दिया गया है। That means the only VLAN numbers that we can play out with is from VLAN number 1 to VLAN number 1001। अब बात करते हैं इस नॉर्मल VLAN रेंज के डेप्थ की। वैसे तो हमने यहां पर अभी तक देखा है कि 12 बिट्स के VLAN ने जो हमें 4096 वैल्यूज दी थी फ्रॉम 0 टू 4095, उसमें से 1006 से 4094 तक की वैल्यूज तो सिस्को प्रॉप्राइटरी VLANs ही ले गए, एक्सटेंडेड VLANs। बचे थे हमारे पास VLAN नंबर 1 से लेके 1005 तक, बिकॉज 04095 तो रिजर्व थे 80.1p ट्रैफिक के लिए। तो VLAN 1 से 1005 के अंदर भी 4 VLANs को रिजर्व किया गया है फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ टोकन रिंग एंड FDDI। अब बचते हैं हमारे पास VLAN 1 से लेकर के VLAN 1001 तक। इन VLANs में कहा यह जाता है कि ये सारे के सारे VLANs जिस तरीके का ट्रैफिक लेके जाते हैं उसके बेसिस पर 5 टाइप के VLANs आपको दिखाए गए। सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी the 5 types of VLANs. Let's start it from the new page, just a second. Okay, just a second guys, I just need to do some quick changes. Looks good now. Okay, so yeah, we will be looking on to those particular types of the VLANs that is also being categorized on the basis of the traffic that they carry, right? So there are 5 types of the VLAN. On the basis of the traffic that they carry. The very first variation of the VLANs that can be easily visible in any particular switching environment would be the default VLAN. Yes, default VLAN by default आपके नेटवर्क में स्विचेस में VLAN 1 को कहा जाता है। इसका नाम डिफॉल्ट VLAN के नाम से ही आपको दिखाई देगा। VLAN 1 एक ऐसा VLAN होता है
जिसको switches में in terms of features wise इसलिए रखा गया है ताकि let's say if you are not an expert network operator and आपको अच्छे से network operate करना नहीं आता है, but you have purchased a switch and you want to utilize it, so you can still use it and it will operate like plug and play, just like an unmanaged device. Okay guys, it's time for a quick 10 minutes of the break. So we'll take the quick break and then we'll join back. So see you in the next 10 minutes.
Okay. We are back. Welcome back, everyone. So now we are on the final node of today's session, where we are looking on to the different types of the VLANs that has been categorized on the basis of the types of traffic that they carry, right? So सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे डिफॉल्ट VLAN, जो कि VLAN 1 होता है. दैट मीन्स अगर आप एक नॉन एक्सपर्ट नेटवर्किंग क्लाइंट हो and you are purchasing a switch, so Cisco switches are capable to help you achieve those particular features that a normal switch can easily operate at as a plug and play option. You don't have to configure the device, just place this particular switch being live in your network and it will start serving you the same things. VLAN 1 को ही डिफॉल्ट VLAN कहा जाता है एंड शुरुआती तौर पर आपके सारे के सारे स्विच पोर्ट्स, all the switch ports of Cisco switch are associated to VLAN number 1 by default. अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे स्विच पोर्ट्स एसोसिएटेड होते हैं VLAN 1 से बाय डिफॉल्ट. एंड कुछ ही वक्त पहले जब आई इंट्रोड्यूस्ड यू दी स्विचेस ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेट्स सी this line. Can you read it? All these switch ports have the single broadcast domain. सभी switches single broadcast domain में होते हैं एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन को इंडिविजुअलाइज करने वाले एस्पेक्ट को ही आप VLAN कहते हैं. एंड जितनी ज्यादा VLANs आप अपने नेटवर्क में क्रिएट करते जाओगे, दैट मच segregated your environment will be in your switched network. So that broadcast domain feature of your switches is achieved with the help of this VLAN zone. Now, other than the default VLAN, the next type of the VLAN that you can easily find in your switched environment is basically a data VLAN. Data VLAN की अगर बात करें, so your data VLAN is basically such VLANs who are capable of carrying the data traffic. मैं इनको इस तरीके से क्यों कैटेगराइज कर रहा हूँ, बिकॉज गाइज नेटवर्क्स में इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका ट्रैफिक दो तरीके से जाता है. एक होता है यूजर जनरेटेड ट्रैफिक, दूसरा होता है यूजर्स वॉइस ट्रैफिक. ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ द VLAN that you can see is basically the voice VLAN, who are capable of carrying the voice traffic. So default VLAN is VLAN number 1. Data VLAN, voice VLANs can be created as per the user's requirement and wish. Next VLAN that comes here, this is an important VLAN to remember of, which is called as the management VLAN. Guys, मैनेजमेंट VLAN भी बाय डिफॉल्ट VLAN नंबर 1 ही होती है आपकी. देखो, मैनेजमेंट VLAN का ना कुछ खास काम होता है. असल में मैनेज VLAN एक ऐसा VLAN होता है जो कि आपके स्विच को मैनेज करने वाले ट्रैफिक को कंटेन करता है. आमतौर पर सभी VLANs अलग अलग तरीके के ट्रैफिक लेके जा रही हैं. तो द ट्रैफिक of the information
which is related to switches self management, we can say self management related tasks. तो VLAN 1 बाय डिफॉल्ट आपके मैनेजमेंट VLAN में भी आता है, ठीक है। मैनेजमेंट VLAN का आप कई तरीके से अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट VLAN का जो इंटरफेस होता है इसको सेपरेट VLAN में डालने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप अपने नेटवर्क में मौजूदा सिक्योरिटी को इनहांस कर सको। एंड इवन इससे आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस भी बूस्ट होता है। बाय डिफॉल्ट वी नो कि VLAN 1 आपका नेटवर्क मैनेजमेंट VLAN होता है, बट इट इज रिकमेंडेड इन द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कि आप हमेशा इसको VLAN 1 से बदल करके किसी और VLAN पर असाइन कर दो, बिकॉज if you as a student have learned that VLAN 1 is your management VLAN interface, definitely an attacker also knows about it, and the very first attempt to vulnerate your switched environment will always be done over to the VLAN 1. That's right. Now comes the most interesting VLAN, the fifth type of the VLAN. This is called as the native VLAN. हो सकता है कई लोगों को इस वक्त मेरे इस पर्टिकुलर VLAN वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन ना समझ में आए, तो गाइस डोंट वरी, आई एम डेलिबरेटली एक्सप्लेनिंग इट लाइक दैट कि आपको समझ में ना ही आए वो। ओके, सो सी, नेटिव VLAN वो VLAN होती है, इट इज सच अ VLAN यस, एक ऐसी VLAN जो अनटैग्ड फ्रेम्स लेके जाती है, एंड वो भी कुछ ऐसे अनटैग्ड फ्रेम्स जो किसी भी VLAN से एसोसिएशन ही न रखते। गाइस ध्यान रखिएगा, स्विचिंग एनवायरनमेंट में किसी भी VLAN से एसोसिएशन रखना एक कैपेबिलिटी है किसी भी पोर्ट की। मतलब VLAN से एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्स रख सकते हैं, मगर और इसीलिए हम कहते भी ये हैं कि आपका जो ट्रैफिक है, आपका ट्रैफिक भी VLAN से तभी एसोसिएशन रखेगा जब वो किसी पोर्ट से इनबाउंड या आउटबाउंड हो, मतलब किसी पोर्ट से अंदर या बाहर जा रहा हो। बट आप क्या करोगे उस ट्रैफिक का जो स्विच खुद ही बना रहा होगा? दैट मीन्स हमने VLAN एसोसिएशन का काम तो स्विच के पोर्ट्स को दे दिया, मगर क्या ये स्विच खुद का कोई ट्रैफिक नहीं जनरेट करेगा? लाइक द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, द कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन, राइट? सो मैनेजमेंट प्लेन का जो ट्रैफिक है वो तो स्विच इंटरनली जनरेट करता है, जो कि किसी भी पोर्ट से एसोसिएट हो ही नहीं सकता। तो इसको आप कौन सी VLAN से लेके जाते हैं? So yes, for that reason native VLAN is used, guys. And yes, as all the statements, by default आपकी native VLAN भी VLAN number 1 होती है, but yes, it is recommended to change it to some other VLAN. Never use native VLAN as VLAN number 1, neither the management VLAN as VLAN number 1.
and never keep your entire running network in VLAN number 1. That is just a plug and play feature given to the Cisco devices. So guys, yes, these are the 5 different types of the VLANs जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा. Okay, now here what we have seen entirely is basically the 5 different types of the VLANs, right? हमारे पास है डेटा VLAN, वॉइस VLAN, मैनेजमेंट VLAN, नेटिव VLAN एंड एट द टॉप ऑफ ऑल द डिफॉल्ट VLAN. गाइस ध्यान रखिएगा वन की थिंग अबाउट डिफॉल्ट VLAN. VLAN 1 पर मौजूद सभी पोर्ट्स तो हैं जिसमें आप यहाँ पे कर क्या कर सकते हो. डिफॉल्ट VLAN में आप VLAN को रीनेम नहीं कर सकते, आप VLAN को डिलीट नहीं कर सकते, आप इस VLAN को क्रिएट तक नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिलीटेड. The only control of you as a network administrator over to the default VLAN is the port assignments or reassignment. And आप इसी default VLAN में से ports को निकाल करके बाकी सभी टाइप की VLANs के लिए अलॉट कर देते हो, and that is how you break down your broadcast domain. So I hope आपको broadcast domain का breaking out feature समझ में आ गया होगा. So this was the 5 different types of the VLANs on the basis of the type of traffic that they carry. अगर आप अपने networking devices में VLANs visibly देखना चाहते हैं, so over to your switches global configuration mode, आपको वहां पर command execute करना होगा, the show command, and the command is show VLAN. इसकी जगह an add-on to the modifier of this command can be used, which is show VLAN brief. Brief एक ऐसा मॉडिफायर है जो आपकी इस पर्टिकुलर कमांड के आउटपुट का सिर्फ स्पेसिफिक रिटर्न आउटपुट आपको देगा, जिसमें सिर्फ आपको VLAN और पोर्ट असाइनमेंट्स दिखाई देते हैं. So here I'll take a switch. In Packet Tracer, the best part is you can visualize every particular thing just like the real environment, but yes, in much more animated manner. So किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास पर्सनल डिवाइस से कनेक्टिविटी मेंटेन करते हुए कंसोल केबल होना चाहिए. ये कंसोल केबल लुक्स समवट लाइक दिस. तो मैं अपनी कंसोल केबल का एक RS-232 एंड अपने में प्लग करूंगा और डिवाइस के कंसोल पोर्ट पर उसका कंसोल एंड दैट DB9 एंड. if you look closely तो ये रहा आपका कंसोल पोर्ट. And with the help of this particular connectivity, अब मैं अगर अपने पर्सनल डिवाइस पर कोई भी टर्मिनल टूल खोलता हूँ, like PuTTY, Secure CRT, Hyperterminal, so with the default settings without change, just keep them remain unchanged and just start. We have just skipped the booting process of our device and you can see you are into the device's CLI. आज के सेशन पे हम कॉन्फ़िगरेशंस नहीं, बस इसके 3 मोड्स देख करके ही इसको एंड करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन लोडेड अप विद सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो गाइस, जैसे ही आप CLI एक्सेस लेते हो विद द फिजिकल कंसोल केबल, you land onto this particular mode of your devices. आपके CLI पर जब भी आपको आपका होस्ट नेम दिखाई दे with a greater than sign, इस पर्टिकुलर मोड को कहा जाता है यूजर्स एग्जीक्यूशन मोड, यूजर एग्जेक मोड. Why is it called as so? Because अगर किसी भी यूजर को आप एक केबल और एक नेटवर्किंग डिवाइस दे दो with its own personal device, he can easily reach onto this particular mode. After this comes the next mode, जहां पर आपको आपके होस्ट नेम के साथ डिवाइस प्रॉम्प्ट would be seen as hash. इस मोड को कहा जाता है privilege execution mode. Just like the designations in an organization, every particular person who is accessing your device, your networking devices, they also have different level of privileges.
And these privileges basically define what level of control or what level of access to the network or to the networking devices any particular user is having. By default, we have 16 different privileges level from 0 to 15, and by default your privilege level is of 7. You can change these privilege levels depending upon the type of the users, and that can be done for this level. But यहाँ से भी आप अपने device को completely configure नहीं कर पाते हो. In order to configure your networking devices entirely, you have to reach on to such a mode which can change the effect globally. जब आपके device का prompt after your host name in brackets config after close bracket then hash. This is the place from where you can easily configure your device, and you can see the effect of the your configurations taking the live resemblance in the environment. This particular mode is called as the global configuration mode. So in the next weekend's session, our target will be to understand the VLAN's entire life cycle. That means its creation, its deletion, its association with the ports, the types of the ports it associates to, and how to verify that thing, along with the troubleshooting aspects, as well as the Cisco CLI modes, how to navigate between these three modes, because that is the most crucial thing that we have to do. And trust me guys, मैं अभी एक key tip दे देता हूँ आप लोगों को. In your keyboards, we have a keyboard button tab and another keyboard button question mark. Linux kernel को master करने के लिए ये दो keys बहुत हैं. Okay, so the more you play with tab and question mark, the more you learn to utilize tab and question mark in the CLI commands, the more master you will be in configuring the devices and mastering the CLI access. हम सीखेंगे CLI access in the coming weekend. So guys, yes, I'm done with today's session. If there is any question, please drop up your comments in the chat. I'll wait for the next few minutes to type and get your questions here. Okay guys, so we have came to the end of the session of today's, and here I'd like to express my heartfelt gratitude for your active participation and engagements. Although no one is presently available, but yes, I know this video will be seen later on. So yes, these particular things, if being interactive with the live audience, that would have been much amazing. So I'll request you guys, if you're watching this video later on, so please try to join my live sessions every weekend on Saturdays from 2 to 4. Before we part ways, let me just reintroduce myself. I am Akash Nigam, your guide through this of technology and infrastructure at Biologics of the Training Basket. Here we strive to innovate and excel in the ever-evolving landscape of IT. But our journey doesn't end here, right? In fact, it's just the beginning. If you found today's session insightful and informative, I'd invite you for this entire YouTube channel's playlist, where every weekend I'm coming live from 2 to 4 for this particular free CCNA classes. So I will be definitely delivering tutorials on topic ranging from networking essentials to advanced cloud technologies too.
and it won't be the limit till cloud. We will be moving ahead to. So, guys, your support on YouTube means the entire world to me. And if by subscribing to my channel, you are not only getting updated about the latest content, but also you will become a part of this vibrant community of learners and enthusiasts. So, as we bid bye from now, I'll encourage you all to hit that subscribe button and turn on the notifications, ensuring you never miss out on the latest updates. Together, let's continue this journey of learning, growth, and discovery. Until we meet again, take care, stay curious, and keep reaching for the stars.